आपकी जो पोस्टिंग थी to New Delhi in 2014 was sui generis. Sui generis से मुराद ये आपकी कि quite unique थी. और आप then you go on to say that it was not just unique in terms of the posting, but also how you exited from there. So between the entry and the exit, sui generis, there's a lot of things to discuss. तो मैं शुरू यहीं से करूँगा. Can you tell us what is this hostility about? Who are you? Who is hostile against you? Who are you hostile against? Who is hostile against Pakistan? Who is hostile against India, and so on? Because मैंने ये पढ़ी है from cover to cover, and I've underlined it, and it's quite interesting. And so hostility is the right word for it. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, thank you, ThinkFest, for launch of my book on webinar online, and thank you, Najam Sethi Saab, for going through the pain of reading my book from cover to cover, and also agreeing to engage with me in a discussion on the book itself. Hostility, actually, when I joined the Foreign Service, I always thought to write my memoirs and I would retire. But जिस तरह आपने भी कहा कि because when I was in Berlin as Pakistan ambassador, so I was called by then Prime Minister Nawaz Sharif at very short notice to come to Islamabad, because the idea was to appoint me as Foreign Secretary. Then I did not know. I thought that perhaps I was being transferred to Beijing. But when I came to Islamabad and had a meeting with him, called on him, so he told me that he has decided to to appoint me as Foreign Secretary of Pakistan. So I should wrap up from Berlin and come to Pakistan as quickly as possible. So मैंने उसी हिसाब से I started wrapping up. लेकिन बाद में भारत जो कुछ भी हुआ वो सारा undo हो गया. उसके बाद चूंकि मैं बर्लिन में था, तो I had already made my farewell calls on Chancellor Margaret, जो है एंगेला मार्केल और बाकी भी, तो मेरे लिए जर्मनी में रहना बहुत मुश्किल हो गया था. तो I then requested the leadership, my own ministry as well, to transfer me from here no matter where. I can go to the Maldives, I can go anywhere, but I would not be staying in Berlin. Because सारी community से farewell खा के मैं हो गया था. So when they decided to post me to New Delhi, so from that perspective it was sui generis कि मतलब मैं इस्लामाबाद आते आते New Delhi पहुंच गया. So I'm still very grateful to the then leadership for reposing trust in me, because New Delhi एक ऐसी posting है किसी पाकिस्तानी diplomat के लिए कि हमारी highest एक dream होती है किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के लिए कि वो दिल्ली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे. तो आई ऑलवेज बी होल्डन टू हिम फॉर पोस्टिंग मी टू न्यू दिल्ली. और जहाँ तक हॉस्टिलिटी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन आई अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, पीपल बैक होम, हमारे फॉरेन ऑफिस का अपना एक मिजाज है जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है. तो हॉस्टिलिटी बिल्कुल आपने सही फरमाया. एक तो हॉस्टिलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड देन आई आल्सो समवट लेटर ऑन फेस सम हॉस्टिलिटी फ्रॉम माय ओन कलीग्स इन द फॉरेन ऑफिस एंड आल्सो फ्रॉम द लीडरशिप, आई वुड से. सो दैट इज आई ट्राई टू कवर बोथ by giving going through my stint in New Delhi, covering different issues, especially Jammu and Kashmir and issues related to terrorism. So this is what is all about. This book is all about. मैं देख रहा था कि I think you say that you were told that you would be the new foreign secretary. Then you came back to wrap up your affairs in Berlin. And then you received, when you got to Islamabad, you found out that they changed their mind. And or you were still in Berlin when you found out that they changed their mind. And then when you said, "Acha, theek hai, I've already done my farewell calls and everything," and I think you felt very hurt, mujhe keh ke, or now they're backing out. And you went to Islamabad, and there, I think, in order, they were feeling guilty or whatever, and they said, "Okay, no, we'll give you a very important post. We'll give you India."
And then you thought, acha, chalo, theek hai. I mean, you also thought that there was a bit of a conspiracy. You were given to understand that at that time there were 2 or 3 of you in grade 21, and all were due for promotions, and only a grade 22 officer can technically become foreign secretary. You served as the spokesman. And then you were given to understand that Azaz Saab, who was at that time the additional foreign secretary, was not well and therefore would not be taking up that post. And therefore the choice was between you and another gentleman, Sadiq Saab. One was Sadiq Saab was Sartaj Aziz Saab's favorite, according to you. And Tariq Fatmi was the one who had taken you to see Nawaz Sharif Saab. And in the end, it turned out that the illness, Azaz Saab's illness, was not serious, and he remained a contender for the foreign secretary position. And then they made him foreign secretary, and you felt robbed of what you thought was your due, or at least that commitment had been made to you. So there was from the day one, you felt upset that this had happened to you, but you were more upset with your own colleagues, who you felt had in some sense or the other misled you or betrayed you or conspired against you. Is that true? Not really, but I was definitely hurt. If I would say I wasn't hurt, I would be lying, I was hurt, but I never expected कि मेरा मतलब ये claim है और मैंने ही foreign secretary बनना है. It doesn't happen. ये leadership का prerogative होता है. Because there is only one foreign secretary. So everybody can't be made foreign secretary. So when I was, when I came to know about it, now Azaz is being made foreign secretary, so I sent him a message, assured him of my full support, because we were good friends, to be honest with you. So ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा कोई claim था, but I was hurt in the sense that the foreign ministry did not do its homework before calling me to Pakistan and arranging my call on the Prime Minister. So that was not in good taste in my view. You do not do these things at that level. So my only grouse was that they should have done their preparations before calling me to Pakistan or announcing, or it came to the media, went public. So that was hurtful, no doubt, but I did not carry any grudge at that point in time against anyone, because hota hai. These things do happen in Pakistan. So because then I was subsequently given India, so that was a good compensation as far as I was concerned. But in your book, you do come across as being quite bitter against Azaz Saab and Fatmi Saab and also Sartaj Aziz Saab. You call them, you say they were all more experienced than me, and they had more insight. I'm not quoting you. But they had apologetic mindsets. And throughout the book, you accuse them of being weaklings. You say that they were misplaced, they were apologetic, they didn't have the balls to stand up to India, something along those lines. So clearly there was a lot of hostility between you and the Foreign Office that was led by these gentlemen at that time, which of course I get that impression distinctly, that they must have also felt this, like you felt it. And therefore, I think there was a lack of communication and a lack of trust between the two sides, which meant that you ended up in a situation where you were not inclined to follow their instructions or their notion of what foreign policy with India should be. That's the impression I get. No, this is all about when I went to India and I then came back for consultations in April. I went there in March and then came back for consultations. And everything was perfect as I looked at it. But subsequently, I do not know what really happened, that because the way things were, it is simply not possible that I would not follow the government instructions. No ambassador or high commissioner could do that. We always follow instructions, and my career, of 36 years, it speaks for itself. So it was simply not possible for me not to follow instructions. The question for me was that what were the instructions?
And during my entire stint of more than 3 years in India, मैंने हमेशा यही insist किया कि भाई जो भी आपकी policy है, keep me in the loop at least, because by keeping me out of the loop, you cannot conduct your diplomacy vis-a-vis India. और मुझे नहीं मालूम कि शायद मेरी जो पहली मुलाकात हुई तहरीक अपने हुर्रियत के लीडर्स के साथ, after Prime Minister Modi visited Pakistan to attend the inauguration of Prime Minister-elect Modi, उससे शायद कुछ एक तासुर ये मिला होगा कि मैं शायद किसी और की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, ये इंप्रेशन हो सकता है. बट आई ऑलवेज अबाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी by the Foreign Office and by the Prime Minister himself on many occasions when I called on him. But since they started, I do not know why and how this came all about. जब मुझे इन्होंने आउट ऑफ द लूप रखना शुरू कर दिया तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कम्युनिकेशन गैप तो था, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी engaging with India through the Indian High Commission in Islamabad and would not even post me कि भाई क्या बातचीत हो रही है, क्या decisions लिए जा रहे हैं. So that created a situation for me, no doubt about that. So I was having a kind of I was in a cleft stick. And और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर से भी खुद भी कहा एक मौके पे उनकी मुलाकात में कि काइंडली जरा फॉरेन ऑफिस को कहिए कि मुझे इन्फॉर्म रखें. और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि ही वुड आस्क द तारिक फातमी साहब टू कीप मी पोस्टेड अबाउट एवरीथिंग, बट दैट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हैपन. Basit sahab, I have some quotations here which are troubling, and I'd like you to sort of explain what you mean by them. You say that you were blamed for deliberately undermining significant opportunities that came along to move the process between India and Pakistan forward. And you say in response that I did what I thought was in the best interests of Pakistan, in sync with the strategic framework of Pakistan's India policy. And I'm quoting you. अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है कि you may have thought you were in sync with Pakistan's traditional India policy, but clearly Nawaz Sharif and his team in the Foreign Office had other ideas. They were trying to change that particular notion or that particular formulation of foreign policy. जो आगे जाके नजर आता है, your critique of what they were doing, you didn't agree with them. And your remark on that is that our diplomacy lacked coherence and requisite aggression vis-a-vis India. Resultantly, you say, our narrative was not gaining much traction at the global level. अब बात यह है कि this notion of aggression and hostility, it does come through in the book on every occasion. Okay, you feel that as the man on the spot, as our man in Havana, as it were, you have a right to interpret that foreign policy and articulate it according to what you think is in the best interests of Pakistan. But यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है throughout, whether it was the response to on that occasion when the Prime Minister went to the inauguration in 2014, or whether it was the joint statement that came out of UFA, whether it was the secretaries' meetings that were supposed to follow, or whether it was the attitude towards the Hurriyat in terms of who to meet, when to meet, and so on and so forth, and so on, and also then subsequently on Pathankot, the Indian position and the Pakistani position. The Pakistani government ended up launching an FIR, which you thought they shouldn't have done. And then it just goes on and on and on, where you have a disagreement with what your Prime Minister and what your Foreign Office are saying. And you feel that they're weaklings. And so you think it's important to become a whistleblower, which is you say that in your book. And I'm intrigued by this. There's a problem for me. And I think I want you to tell me, I'm perfectly happy to accept that you thought differently. That's fine. You have every right to think so. But I was under the impression that the Foreign Office is supposed to articulate the foreign policy that is agreed upon or articulated by the political leadership. And the politically elected leadership of the country wanted to do things in a particular way. And what seemed to you to be a soft, weakling, weak need, these are words you use, approach. So you felt that it was your right as a patriotic Pakistani to continue with the old
quote-unquote hard line, which is basically what we call the hard line, reciprocity. In other words, don't give anything to India without getting something in return. And you felt that they were bending over backwards to appease India. And you felt that that was not the right thing to do, and you let them know this. Sometimes you went out on a limb to articulate it yourself in India, which is why the Indian media and the Indian analysts say that you were a hawk and you were there because you were pro-establishment rather than pro the civilian government. तो ये सारे इल्जाम लगे हैं आपके ऊपर, और ये issues जो हैं ये they need to be clarified. I was under the impression that as a foreign office or even as a foreign secretary, you can't make foreign policy. You cannot take any initiatives which are going against the spirit of your elected leadership. That was my understanding. But here you clearly say that you felt it was right to do what you did. नहीं, बात ये है, you know, I was the person in New Delhi who, despite opposition at home, I strongly recommended Prime Minister Nawaz Sharif to attend Prime Minister-elect Modi's inauguration. So ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उनको propose किया और उन्होंने agree भी किया मेरी proposal से, and he came. देखिए, question ये है कि the point which I wanted to make in this book is कि अगर कोई policy में तब्दीली है तो you let your ambassador know about it. Ambassador vacuum में तो काम नहीं करता ना, ambassador को जो brief मिलता है वो उसी हिसाब से चलता है. अगर आप मुझे ब्रीफ कुछ और दे रहे हैं और पॉलिसी आप कुछ और कंडक्ट कर रहे हैं, तो that means there is some incoherence in the policy. This is the point which I wanted to make, कि जी आप मुझे कुछ कह रहे हैं कि ये पॉलिसी है हमारी, हमने ये परसू करनी है, हमने हुर्रियत के साथ राब्ते भी कायम रखने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन आप कुछ पीछे मेरे कुछ और कर रहे हैं, तो where should I stand? That's why at one point in time I suggested that I better be transferred from New Delhi because this is not going to work. This is unnecessarily harming Pakistan's interest. But they refused to transfer me from New Delhi. I was very clear. I was under the instructions of the government of Pakistan, and the government of Pakistan was headed by Prime Minister Nawaz Sharif. The question was, when did I object to comply with the instructions whenever I received the instructions from the Foreign Office? मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो instructions के मुताबिक ना हो, लेकिन ये अलग बात है कि ज़्यादा अक्सर औकात हमें पॉलिसी में कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया. That was the problem. But you know, I'm intrigued because I mean I'm shocked actually कि ये कैसे हो सकता है कि आपको पहले वो हाई कमिश्नर लगाएं and उसके बाद they keep you out of the loop. Why would they do that? And then also, why didn't they recall you if there was a problem? This is the problem because, you know, in the Foreign Office itself, by 2015, there were still people who thought that I would become Foreign Secretary after Azaz. So, but they never wanted me to become. So they wanted to create wedges between myself and the Prime Minister. कि यार ये तो establishment का आदमी है, इसको नहीं करना. So there were many things, you know, which I mentioned in the book itself, which were very saddening from my perspective, because, you know, I have served in the foreign service for 36 years. So how could, you know, I do not know कि किस तरह foreign policy को conduct किया जाता है, किस तरह diplomacy को conduct किया जाता है. लेकिन जो मेरा brief था, I absolutely, you know, went along with that brief. Not for once did I deviate from that. मगर you see वो brief clearly इस्लामाबाद में they didn't think that was the brief. For example, आप कहते हैं कि you write that, you know, your mission statement, what you understood to be your mission statement. You say 4 points थे. You say my first mission statement was to persuade India that Kashmir was the core issue, without which there could be no normalization. Uski resolution was important. Second, you say it was to effect unity among the various factions of the resistance movement in Kashmir, the parties and the groups, etc. Third, you say it was to consolidate existing confidence building measures. And fourth, very important, you say it was to start the bilateral dialogue process that was both balanced and tenable. Now, this is very interesting, balanced and tenable. Because clearly, up till that point, hamari position thi that there's a composite dialogue and Kashmir is the core issue of the composite dialogue. But then you say that clearly there was some change in this. Now we were going in for a bilateral dialogue without necessarily putting Kashmir as the core issue.
which is of course your objection to what happened in UFA, and then also in the other negotiations that took place about the secretary level talks, because one couldn't come to a grip about what they were going to be about, what they were going to focus on. तो बात यह है कि ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो आपकी ब्रीफ थी, either you misconstrued your brief or you weren't sufficiently briefed by the prime minister or by his lieutenants, because you constantly keep saying कि उन्होंने ये कह दिया और मैं यहाँ ये कर रहा था, वो उन्होंने ये बयान दे दिया which embarrassed me and I thought ये होना चाहिए, and I tried to set the record straight. आपने सरताज अजीज साहब के ऊपर भी बहुत से इस किस्म की बातें कही हैं कि उन्होंने ये कह दिया, न्यूयॉर्क में उन्होंने ये कह दिया, ये तो नहीं था कहना, ये नहीं कहना चाहिए था. मुझे ऐसे लगता है बासित साहब that your patriotism and your training in terms of India got the better of you, and you were not in a position to actually give your full-hearted support to the positions that Nawaz Sharif and his coterie of foreign office people, Sartaj Saab and the others were trying to do. मुझे तो लग रहा है they were trying to move on. They were probably also trying to change the essence of the old positions, which is, आपने देखा ना वो क्या हुआ बाद में, वो tweets आनी शुरू हो गई, rejected. पठानकोट का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि you advised them not to launch the FIR, मगर मियाँ साहब went ahead and did it. अभी तो बहुत सी बातें निकल आई हैं कि he did it and the establishment was not happy also. You were not happy, but he still went ahead and did it. So clearly establishment की view भी बिल्कुल was very close to your view, but मियाँ साहब's view, Fatmi's view, Sartaj Aziz's view was different. So there was a serious problem here. नहीं देखिए ना अपना सेठी साहब, जो मेरी मिशन स्टेटमेंट है, that wasn't, it was, I did convey to Pakistan when I arrived there. This was on 3rd or 4th March, I sent a communication to Pakistan conveying these 4 points, that this would be my mission statement. आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? ये देखिए मैंने क्लियरली फॉरेन ऑफिस को बताया कि मेरी मिशन स्टेटमेंट ये है, because that is in sync with our national policy vis-a-vis India and Kashmir. So ये बिल्कुल मिशन स्टेटमेंट उसमें फिट होती है. बाद में जब भी देखिए कोई चेंज होती है ना, तो उसमें हमारी कितनी इनवॉइस कॉन्फ्रेंस हुई. आई वाज कॉल्ड, अटेंडेड दोज इनवॉइस कॉन्फ्रेंसेस. आई नेवर गेट एन इम्प्रेशन, एटलीस्ट इन माय मीटिंग्स, कि जी ये हमें कोई तब्दीली हम कर रहे हैं, हम कोई कॉम्पोजिट डायलॉग तो पहले ही खत्म हो गया था 2008 के बाद, फिर रिज्यूम डायलॉग शुरू हुआ पीपल्स पार्टी के जमाने में. तो इन एनी केस वी हैड टू कम अप with a new dialogue framework. वो तो होना ही था. तो उसमें क्वेश्चन यही था कि कश्मीर को हमने कहाँ पे लाना है. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं जो है हमें एक नेशनल पॉलिसी दी गई थी, मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट इस्लामाबाद को कन्वे की, उसके बाद इस पे कई कंसल्टेशंस भी हुई. हमें तो कोई नया ब्रीफ, मुझे बहैसियत पाकिस्तानी हाई कमीशन इंडिया में कभी ये नहीं कहा गया कि जी आप फिलहाल कश्मीर को जरा बैक बर्नर पे रख दीजिए और हम जरा कोशिश करते हैं कि बायलैटरल डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाए. अगर मेरे साथ कोई पॉलिसी में तब्दीली है तो शेयर कर लेते, तो परहैप्स वी वुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. फिर दूसरी बात ये भी आप नोट कीजिए सेठी साहब, कितनी कॉन्ट्रडिक्शन इसके सिस्टम में हैं. आपने सरताज अजीज साहब का जिक्र किया, वो एक चीज के बारे में मुख्तलिफ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तारिक फातमी साहब दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पीएम ऑफिस साहब तीसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो इस किस्म की चीजें जब होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मुल्क में फॉर दैट मैटर, तो दैट इनएविटेबली रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन. और यही उस जमाने में हो रहा था बदकिस्मती के साथ. जी, मुझे इम्प्रेशन जो मिला आफ्टर रीडिंग योर बुक एंड देन टॉकिंग टू सम अदर पीपल इन जिनके नाम वाम लिए गए हैं टू फाइंड आउट कि हो क्या रहा था, माय इम्प्रेशन इज दैट शॉर्टली आफ्टर यू गॉट देयर एंड योर रेजिस्टेंस टू द उफा statement. In fact, आप कहते हैं the statement was a huge setback for Pakistan. You say I was incensed. आप बहुत नाराज थे. We had disturbed, we had deep, मतलब है कि आपने composite dialogue framework को, we have jettisoned the composite dialogue framework for a new bilateral one. And then आप बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, कहते हैं ये इतना मुश्किल के साथ ये composite dialogue का process, painstaking work of our seniors, ये सारे के सारा डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में इन तीनों ने फेंक दिया. It's a very serious charge you are leveling against the elected leadership of the country. Sethi साहब, if you go through my interviews following the UFA statement, मेरे ख्याल में मैंने उसको इतना vociferously सपोर्ट किया है पब्लिकली कि आप हैरान हो जाएंगे.
इतना फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया जितना मैंने इंडिया में करण थापर को इंटरव्यू में, राजीव देसाई को इंटरव्यू में उस ऊफा स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। तो ये बात नहीं है पब्लिक, ये तो अब मैं रिटायरमेंट के बाद सारी बातें कर रहा हूं ना, लेकिन एज ए करियर डिप्लोमैट आई न्यू माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ऊफा स्टेटमेंट, मुझे लाख शिकायत हो, मेरे रिजर्वेशंस हो, बट आई एम इन दैट कंट्री एंड इट वाज माय ड्यूटी टू डिफेंड ऊफा स्टेटमेंट। You show me one incidence where I went public and upbraided the UFA statement. मगर मुझे impression ये मिलता है कि the leadership in Islamabad was definitely aware of the fact that you are on a different line of thinking. Because I did communicate privately through communications. So I think that's where trust was lost. And I think when the trust was lost, they then decided to bypass you. And I think ये जो charge है ना कि आपको पता है उस वक्त ये सारा business of the elected leadership wanting to do something and the establishment sabotaging it, ये तो चल रही थी ना बात, वो जो tweet sheets हुई, वो वो सब नहीं, वो background में तो ये था ना। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पठानकोट के ऊपर भी you took a position that was closer to the establishment's position than the prime minister's. Let me go forward. उसके बाद उफा के ऊपर भी the same thing happened because उसके बाद बड़ा शोर पड़ गया था यहाँ। तीसरी चीज ये कि इंडिया के अंदर आपके ऊपर आपने खुद ये कोट किया है, you've shown those articles where the Indian media said कि ये तो establishment का हॉक है और he is derailing नवाज शरीफ को काम नहीं करने दे रहे, वो he wants to move on और ये नहीं करने दे रहे, ये आपने खुद लिखा है। तो ये impressions कैसे ये पड़ गए if you were not actually unhappy with this formulation? उसकी वजह ये है ना कि देखिए यहाँ पे वो इंडियन हाई कमिश्नर के थ्रू काम कर रहे थे और ऑब्वियसली इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उनको लीड कर रही थी। मुझे देखिए पठानकोट के मामले में भी इफ देयर वाज एनी कमिटमेंट ऑन द इंडियन साइड कि एज हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद एक रेसिप्रोकल विजिट होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम इंडिया, तो आई शुड हैव टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, मुझे बता तो देते ना कि हमने एक रेसिप्रोसिटी की है। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कहां से पता चलेगा कि हमने पठानकोट में ये कमिट कर लिया है। If you are not keeping me in the loop, तो how would I know? वो तो देखिए एक में सेमिनार था, वहां में गया, किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि भाई पाकिस्तान कमिटेड के एक रेसिप्रोकल विजिट होगा, तो मेरे पास तो कोई नहीं था कि मैं कुछ कहता कि होगा कि नहीं होगा। उस वक्त मेरे जो ऑफ द कफ रिएक्शन ये था कि ऑन पठानकोट we should seek bilateral cooperation rather than reciprocity because in such matters cooperation is more important than reciprocity. So that was the perfect answer which I gave. अगर बाद में मुझे अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो कम से कम अपने हाई कमिश्नर को इन्फॉर्म तो रखो ना यार। मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इन्फॉर्म सही कह रहे हैं आपने कहा कि एक दो दफा फॉरेन सेक्रेटरी ने आपको फोन करके भी ओपन लाइन पे कहा कि यार ये स्टेटमेंट्स वगैरह ना दो, इतनी पब्लिक डिप्लोमेसी ना करो, मीडिया के साथ एंगेजमेंट ना करें। मैंने कहा जी मेरा ये काम है मीडिया के साथ एंगेजमेंट करना, अपना नैरेटिव बताना, और ये मतलब मैं क्या करूं अब, मतलब इतना आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं वहां न्यू दिल्ली में बैठ के कि अगर एक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को आप इन्फॉर्म नहीं रखेंगे, आप डीलिंग करेंगे इंडियन हाई कमिश्नर के साथ, जो मुलाकातें होंगी, फिर उसके मिनट्स भी आप मुझे नहीं भिजवाएंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो मैं किस तरह काम करूंगा? ये तरह सोचिए आप मेरे शू नहीं, मैं तो बिल्कुल समझ रहा हूँ। मतलब आई थिंक यू हैड वैलिड ऑब्जेक्शंस टू द फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली इफ यू आर नॉट बीइंग टेकन इनटू द लूप, और आप एक मोल्ड के अंदर चल रहे थे, बट उनको चाहिए था कि आपको बुला के टेक कॉन्फिडेंस में लेते, अगर फिर उसके बाद इफ यू बिट्रेड योर देयर कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली, बट मुझे लगता है ये इट गॉट ऑफ टू द रॉन्ग स्टार्ट। ये हॉस्टिलिटी जो थी, वंस दे डिसाइडेड नॉट टू मेक यू द फॉरेन सेक्रेटरी, आई सस्पेक्ट देन रिलेशंस बिटवीन यू एंड द देन फॉरेन हुएवर बिकेम द फॉरेन सेक्रेटरी, वो नहीं ठीक रहे, मुझे नजर आ रहा है। वो तो आपकी किताब से लग रहा है। नहीं, that was not the reason, because frankly speaking, when I came to Pakistan for consultations in April, because एजाज के साथ मेरे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे, कोई हमारा मसला ही नहीं था, और मैं I never imagined expected to become foreign secretary, frankly speaking, because they were senior people to me in the foreign office. It was not my turn at that point in time. तो मेरे लिए तो कुछ मसला ही नहीं था। जिस पर मैंने पहले अर्ज किया, फॉरेन सेक्रेटरीशिप तो आती जाती रहती है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
लेकिन बाद में ये जो है ना, मेरा ख्याल में जब मेरी हुर्रियत के साथ मीटिंग हुई तो दैट डिड नॉट गो डाउन वेल. हालांकि वो भी एक प्रैक्टिस चली आ रही थी और मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टिंग मी ऑन दैट. लेकिन उससे मेरा टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में वही था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थॉट कि आई शुड नॉट हैव मेट द हुर्रियत लीडरशिप. But that became kind of, a compulsion for me, especially when Indians openly threatened us. If India had played, nicely with me, they would have called me in and told me कि यार अभी ना मिले, तो शायद I would have considered their request. But going public about it and threatening Pakistan कि you cannot meet the Hurriyat leadership, that was enough, for me, and sitting on this spot. That's true. उसमें भी नहीं, I understand that. You know, obviously अगर कश्मीर के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, it's very important to be in touch with them. मगर डिप्लोमेसी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है ना. अब आप खुद कहते हैं कि when नवाज शरीफ साहब came to Delhi for the inauguration, फैसला ये हुआ कि हुर्रियत को नहीं मिलना और उनके लीडर्स जो हैं कश्मीरी पार्टीज के नहीं मिलना. और आपने you raised this with the leaders, and उनमें से you say कि some of them said, like Gilani said, नहीं ये क्या बात हुई, and some were sympathetic कि हाँ अभी ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो doesn't matter, we understand, it's a beginning हो रही है ये वो. So उनकी तरफ से भी ये था कि it doesn't matter so much. But throughout this whole thing, आगे जाके फड्डे भी इसी बात पे पड़े ना कि जब आपने बुला लिया उनको और Indians tried to bypass you and then you got, तो ये चीजें चलती रही हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ fundamental lack of trust and communication between the then coterie that was running foreign policy vis-a-vis India and उनके जो भी उनके ख्यालात थे, and you on the ground, and I think basically you were upset they were not taking you into the loop. They were upset that you were taking positions on your own, and perhaps वो आपके साथ वो लग गया था establishment इसलिए क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रिजेक्टेड ट्वीट्स आ रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, वो आपने देख ही लिया. तो आई थिंक ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, यू वर कॉट, you began on a bad note unfortunately and then this just tended to continue. But Sethi sahab, to construe ke I was not following the instructions, I think ये ठीक नहीं है. मैं हर स्टेप पे I was following the instructions. अगर कोई इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती, क्वेश्चन यही है कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे थे. जहां तक हुर्रियत का ताल्लुक है, देखिए, and I'm glad कि I met the हुर्रियत then before the Indian Foreign Secretary's scheduled visit, because it was important, at some stage कि हम टेस्ट करें न्यू गवर्नमेंट को कि where do they stand in terms of Jammu and Kashmir, because हमारे बैक होम एक ही भी तासुर था कि मोदी साहब इज वाजपेयी और इसको जरा ये कश्मीर पे हमारा सॉल्व कर देंगे. लेकिन हमें ये बड़ा जल्दी मालूम हो गया कि व्हाट आर दे अप टू, क्योंकि उसी साल इलेक्शंस हो रहे थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और मिशन 44 आ गया था. तो they were ratcheting up the situation on the Jammu and Kashmir dispute. So it was good in a sense कि हमने पहले ही मालूम, हमें एक पता चल गया कि where does the new government stand in terms of Jammu and Kashmir. उसके बाद भी अगर आप देखिए तो उफा के बाद भी, इफ यू रिमेंबर, हमारे सरताज अजीज साहब ने आना था अगस्त 23 अगस्त 2015 को. उफा के बाद ये हुर्रियत का मसला दोबारा हुआ कि दे रिफ्यूज टू अलाउ सरताज अजीज साहब टू मीट द हुर्रियत लीडरशिप. उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया एंड देन द विजिट वाज कैंसिल्ड. तो ये नहीं है कि मैं बस कोई इंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा था. उस वक्त जो मुझे इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी, कोई नई इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं मिली थी कि आपने हुर्रियत से नहीं मिलना, आपने ये काम करना है तो इस तरह करना है. अगर आई विश कि मुझे लूप में रखते, मुझे इंस्ट्रक्शंस देते, तो परहैप्स चीजें शायद डिफरेंट होती. लेकिन अब आई कांट से कि यहाँ पे देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, वो तो पहले भी थी, अब भी शायद हो रही हो, आई डू नॉट नो. लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू अपॉइंट समवन एज योर पॉइंट मैन इन न्यू दिल्ली इन पर्टिकुलर, देन यू हैव टू फुली ट्रस्ट हिम. ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को न्यू दिल्ली में लगाएं और उस पर ट्रस्ट न करें. फिर बेहतर यही है कि आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, कहीं और भिजवा दीजिए. लेकिन वो भी नहीं कर रहे थे. तो आई वॉज इन अ फिक्स कि मैं करूं तो क्या करूं, कोई मुझे बताए. आपने सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं? You thought about that? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि रिजाइन करूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ
मेरे अपने कोई ज़ाती प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, मैं भी तैयार नहीं था रेजिग्नेशन के लिए, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो आई नेवर कंसिडर्ड रिजाइनिंग, बट आई डिड रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए अगर आप, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेन ऑफिस इज नॉट कीपिंग मी इन द लूप. लेकिन दैट डिड नॉट हैपन अनफॉर्चुनेटली. आई मीन आप कहते हैं कि आई वाज एवर रेडी टू रिजाइन but was not willing to pander to Modi at the cost of Kashmir, then you say very strong words. Diplomacy cannot be a profession for people suffering from trepidation. उससे पहले आप कहते हैं कि ये हजरात इस्लामाबाद में सरताज अजीज साहब, एजाज साहब, फातमी साहब were apologetic, they were weakening our Kashmir policy वगैरह वगैरह वगैरह. तो बात ये है कि I understand your dilemma. लेकिन सेठी साहब देखिए ना, इसमें मैं अपनी तरह से अगर कुछ कहूँ तो ठीक है, आप कहें कि आप ठीक नहीं कह रहे, लेकिन जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखिए, ऊफा से लेकर इस्लामाबाद की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है 9 दिसंबर 2015 की, वो बड़ा क्लियरली आपको बता देता है कि कश्मीर कहाँ पे खड़ा है. मैंने यहाँ ये भी कहा है कि जब हम सुषमा स्वराज साहब वजीर आजम से मिलके निकलते हैं हम लोग, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एजाज साहब से कहते हैं कि देखिए यार, अगर मुंबई का जो है इंसिस्ट करें तो मान लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है. लेकिन आई इंटरप्रेटेड इट डिफरेंटली. मेरा ख्याल था कि वज़ीर आज़म हमें ये नहीं कहा कि आप यूनिलैटरल सब कुछ दे दीजिए. मैं यही इंसिस्ट करता रहा निगोशिएशंस के दौरान भी, और सुषमा स्वराज मुझसे नाराज हो गई इस बात पे कि आप बहुत टफ निगोशिएटर हैं. मैं कहता रहा कि भाई, मैं इनके कानों में कहता रहा कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं था, लेकिन उनको ऑब्वियसली ज्यादा पता है, प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा करीब वो थे, उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं. तो अगर आप सारी आउटकम डॉक्यूमेंट्स ही देख लीजिए तो आपको बड़ा अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, गलत है. नहीं, वो बेसिकली मुझे जो समझ आ रही है, उस वक्त भी समझ आ रही थी कि जो द फॉरेन पॉलिसी दैट नवाज शरीफ वाज ट्राइंग टू फैशन, वो एक डिपार्चर थी फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी व्हिच वाज बेस्ड ऑन एवरी लिटिल थिंग बीइंग रेसिप्रोकल, every little tit for tat, some zero game. And जैसे उन्होंने यहाँ लाहौर में 99 में कश्मीर एज अ कोर इशू को निकाल दिया था in order to get the composite dialogue moving, he was wanting to move on. And I think उसमें ज़ाहिर है डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो सारा प्रॉब्लम ही यहाँ इस सारी चीज़ में यही रहा कि rightly or wrongly, he wanted to change the old paradigm of Pakistan's foreign policy in some ways, and his team was ready for that. But then there were forces within Pakistan and possibly even in the foreign office, some people who were not ready to do that. And I think वो problem अभी तक चल रहा है, because अब मैं देखता हूँ कि आगे आपकी critique जो है, it continues. You have taken issue with a lot of other things that have happened since then. You hold Imran Khan also responsible. You're saying कि ये भी गलत कर रहे हैं सारा कुछ. You're saying his foreign policy is also up the creek. You're saying कि after this 370 जो कुछ किया ये इन्होंने, they weren't aggressive enough. यहाँ तक आप कहते हैं कि they should have heated up the line of control. They should have done something. Even war is acceptable. ये क्या था, ये लेट गए हैं basically. फिर आपने ये भी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, on the other side आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को खान साहब ने फैशिस्ट कहना शुरू कर दिया. इसकी क्या जरूरत थी? इट वाज इन बैड टेस्ट एंड इसकी इट क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स फॉर डिप्लोमेसी. यू शुड नॉट गेट पर्सनल. तो मतलब है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेटेड सेंस ऑफ how diplomacy should be conducted, and you are quite unsparing, whether it is Nawaz Sharif or on now Imran Khan. You are unsparing. You still feel that yes, there should be a strong response from Pakistan at every level, and any unilateralism or any concessions that we make to India are unacceptable, and we should be taking a harder line. आपने इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी विज़-अ-vis सऊदी अरेबिया, विज़-अ-vis ईरान, विज़-अ-vis अफगानिस्तान, विज़-अ-vis अमेरिका, आपने वो भी क्रिटिसाइज की है in passing later on. So you are as we say, an equal opportunity offender. No, I speak my mind. I may be wrong. I am not suggesting कि I have monopoly over wisdom. मतलब मेरी भी सोच गलत हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है, हैविंग लिव्ड इन इंडिया, कि देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक तो विदाउट settling the Jammu and Kashmir dispute, if somebody thinks in Pakistan that we can have a normal relationship with India,
I think we are living in fool's paradise. जब तक जम्मू और कश्मीर का मसला किसी तौर भी हल हो नहीं होता, उस वक्त तक simply possibility ही नहीं है कि we can, have a normal relationship. We will always come back to square one. We will take one step forward, 2 steps back, और एक vicious cycle will continue forever. ये मेरी conviction है ये. I hope कि I am wrong, लेकिन this is what I believe in, कि जब तक जम्मू और कश्मीर का मसला हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई होप नहीं है. We have tried this approach in the past as well to put Kashmir on the back burner. बड़ी चीजें हमने की, but nothing really worked. इसलिए जरूरी ये है, और मैं इसीलिए इस गवर्नमेंट के भी जो कश्मीर पे जो इनका रिस्पॉन्स है, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट, और मैंने ओपनली उसका इजहार भी किया है. This shows कि I am, I have my own views. There is no doubt. नहीं, you are right, but मैं आपको थोड़ी सी तारीख, allow me, because I am please. स्टूडेंट ऑफ इंडो पाक रिलेशंस, बहुत मैंने मेहनत की है समझने की. देखिए, मसला तो ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कह रहे हैं ना कि विदाउट अ रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू देयर कैन बी नो नॉर्मलाइजेशन. बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. एंड बाय रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू you mean, obviously you mean we go back to the UN resolutions. No, this is your interpretation. I never said that. अच्छा, you never said it, but let me explain how I read it. Okay. आपने कहा कि मुशर्रफ के 4 points, which I thought personally was opening up a great opportunity, कि चले ठीक है ये कर ले for the time being, and आपने उसकी भी तनकीद की कि ये भी it was a non-starter. नहीं, मैंने देखिए करेक्शन है कि मैंने उसकी तनकीद नहीं की. मैंने कहा कि the way it was brought to the public, ये देखिए डिप्लोमेसी में थोड़े न्यूएंसेस होते हैं. You do not publicly declare कि you can go beyond your stated position. Once you say that, half of the diplomacy is gone. You lose your negotiations, space. So ये मेरा तरीक़ाकार, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे. बट मुझे याद है ना जी, जब बेनज़ीर भुट्टो आई पावर में 1988-89 में, तो उस वक्त she had certain ideas about how to move on Kashmir. But the establishment and then Foreign Office didn't support her on that. She was called एतजाज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, और she was called a security weakness, and so on. फिर नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में जो कुछ किया, the establishment derailed it. उसके बाद कारगिल, again problematic. Then Musharraf goes and does exactly what the politicians, elected politicians, have been saying, and then gets into trouble because he does it the wrong way. He goes and does something, and then so मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि we need to be a little cognizant of the fact that there is a constitution, there are elections, there are elected politicians. We should be giving them the right to formulate foreign policy. We cannot say that only the military establishment will formulate foreign policy, and that foreign policy will be part of the national security doctrine, the tail wagging the dog. और आपने बड़ी सख्त तनकीद की अपने फॉरेन ऑफिस के colleagues के ऊपर. You've called them weaklings, you've called them all sorts of names, and then you of course say that there should be a reform of the foreign office. Very good ideas there, but I think अब नजर जो मुझे आ रहा है कि 70 साल में this line that जिसको हम defend करते रहे हैं कि there can be no normalization unless the Kashmir issue is resolved. How that resolution, every time the civilians try to find a way to resolve it, derail kar deti establishment. Or let's not go there, because there is so much evidence to that of that. वो और बात है, the Indians take full advantage of it, obviously. But अब देखिए ना हुआ क्या? So many wars, so many generations wiped out in Kashmir, so much poverty in Pakistan because of this conflict. I mean, I don't care about what happens in India. And then on top of that, now they've gone and done something which is more or less irreversible. और अब हम चले कहाँ और पहुंचे कहाँ? तो अगर यही पोजीशन हम लेंगे और आप कहते हैं जी नो नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकती, तो नॉर्मलाइजेशन क्या? We've been close to the brink of, we've done 3 wars, we've come close to conflict. Now we don't have money for fuel, and now we don't have money for our defense because we've run out of danas, as they say. वो और बात है कि उनका भी बुरा हाल है, but बात ये है कि this is what with my understanding, this is what Benazir was hoping to do, this is what Nawaz Sharif was trying to do. मगर वो resistance इतनी है कि नहीं जी हम तो लड़ेंगे, हम तो मरेंगे. और लड़ना मरना तो एम्बेसडर साहब आप और मैं तो नहीं लड़ेंगे ना, गरीब लोग लड़ते हैं, मरते भी वही हैं. तो बात ये है कि अगर ये पॉलिटिशियंस को हम नहीं इजाजत देंगे टू फाइंड वेज एंड मींस और उसको साबोटाज कर देंगे, बिकॉज हमारी सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड एंटी इंडिया, बड़े गलत लोग हैं, बड़े रास्कल्स हैं, सब कुछ है वो,
बट अब मसला ये है कि वी आर एंडिंग अप इन नो मैन्स लैंड एंड हमारी सिचुएशन विज़-विज़ इंडिया इज गेटिंग वर्स एंड वर्स. सो वेयर इज द सक्सेस ऑफ दिस फॉर्मुलेशन? सेठी साहब, क्वेश्चन ये है कि who is opposing normalization of relations with India? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी कैन अपोज दिस ऑब्जेक्टिव कि जी लेट्स हैव a normal relationship with India. But the question is how, on what basis? आपने एक 70 साल 72 साल एक कश्मीर जो आप कहते हैं, आपने वहाँ पे 70-80 हज़ार लोगों ने शहादतें दे दी. कश्मीर का एक सीरियस मसला है. या तो फिर आप ये कह दें कि जी बस हम कश्मीर को फॉरगेट कर देंगे और हम जो है एक नया दौर शुरू करने वाले हैं, फिर तो ठीक है, स्टेट की पॉलिसी हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी. लेकिन अच्छा, ये नहीं हो सकता. कताकामी माफ, हाउ डू यू फील अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स? आर्मी चीफ has given a very significant statement. नहीं, देखिए, मैं रीसेंट डेवलपमेंट से ही मैंने अपना एक थोड़ा बहुत अपने ख्यालात का इजहार किया है कि मैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में जो है अच्छाई देखना चाहता हूं. लेकिन क्वेश्चन यही है कि कश्मीर कहाँ पे है. इसलिए मैंने एडवाइस यही किया है कि अभी टाइम इज नॉट, मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि नाउ इट इज नॉट अ टाइम टू गेट इनटू फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग विद इंडिया. अगर आपने कुछ अचीव करना है तो दैट कैन बी डन ऑन द बैक चैनल, और बैक चैनल में आपने अप फ्रंट कुछ अचीव करना है कश्मीर पे तो ठीक है, वरना वंस यू रिज्यूम द डायलॉग प्रोसेस विद इंडिया तो थिंग्स विल बी टेकन एज नॉर्मल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. फिर वही अगेन हम उसी पुराने जो पैटर्न उसमें आ जाएंगे और हासिल वसूल कुछ नहीं होगा. So are you saying कि बैक चैनल के जरिए नॉर्मलाइजेशन हो जाए विदाउट कश्मीर रेजोल्यूशन? बैक चैनल में नहीं, बैक चैनल पे अप फ्रंट आपने कश्मीर पे क्या देता है इंडिया, क्या आपको दे सकता है, आपने इंडिया अगर कहता है कि हम कुछ नहीं दे सकते आपको, नहीं तो फिर तो बात खत्म हो गई. देखिए ना, नहीं, बात यह है कि क्या दे सकते हैं. वो 370 को तो वापस नहीं कर सकते. फॉरगेट अबाउट यूएन रेजोल्यूशन. वो तो 370 भी नहीं, वो तो उसके लिए भी वापस करने के लिए तैयार नहीं है. आप वहां थोड़ी बहुत ह्यूमन राइट सिचुएशन बेहतर करा देंगे. इज दैट गुड इनफ फॉर यू? नहीं, इट इज नॉट गुड इनफ फॉर अस. इट इज पाकिस्तान अगर कश्मीरियों के लिए गुड इनफ है तो हमारे लिए भी गुड इनफ है. कहना यही है कि कश्मीरी भी एक मेजर स्टेक होल्डर है इस सारे सिलसिले में. आप उनको तो बाईपास नहीं कर सकते. आफ्टर ऑल अगर चले हम मान लेते हैं कि 370 जो है उसको तो वो कोई भी अब पार्टी वापस नहीं ले सकती. अगर कांग्रेस भी आ जाए तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती. लेकिन तो अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि नॉर्मलाइजेशन कहां तक फिर हो सकती है? नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से. हो ही नहीं सकती. ट्रेड वगैरह शुरू हो जाएगा, कुछ अरसे तक चलता रहेगा, फिर भी विल कम बैक टू स्क्वायर वन, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया. नॉर्मलाइजेशन के लिए जरूरी है कि एक बाहमी एतमाद हो. सार्क को भी आप कर लेंगे, सार्क भी हो जाएगी, 19 समिट इस्लामाबाद में हो जाएगी, मोदी इमरान खान मीटिंग भी हो जाएगी, एक और जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो जाएगी. बट रेस्ट अश्योर्ड दिस मे कंटिन्यू फॉर अ ईयर और 2 or 3. But unless because Jammu and Kashmir is not a territorial issue, there are 8 million people there in the valley, और जम्मू में 12 मिलियन लोग हैं वहां पे. ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप यू लुक द अदर वे, वहां पे ऑपरेशन हो, ड्रैकोनियन लॉज हो, 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे दिन रात स्टेट टेरर कर रहे हों, और आप कहें कि जी हमारे लिए कश्मीर इररेलेवेंट हो गया. ये मुमकिन ही नहीं है. ये तो कोई नहीं कह सकता कि इररेलेवेंट हो गया, मगर डी फैक्टो आप you can move towards open regimes, you can move towards trade, you can move towards cultural relations, you can do a lot of things जिसे आप normalization कह सकते हैं. लेकिन हमने पहले भी किया, including some understanding between the Indian government and the Kashmiri parties. अगर वो कुछ, देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, I'm just being the devil's advocate. पहले भी तो एक स्टेज आई थी ना 50s 60s में कि when the Kashmiris had reconciled to be staying with India. In fact, Abdullah, that is what he was all about. और उसके बाद भी there are still parties there who are pro-India and are ready to work with India. अब और मगर दिन ब दिन वहाँ सिचुएशन खराब होती जा रही है. वो खराब इसलिए होती जा रही है because from negotiations to war to jihad, ये सारी चीजों की वजह से अब और मिलिटेंसी वहाँ आ गई है, और वो बेचारे पिस रहे हैं because the Indian state is so repressive, they are not ready to concede. और हम कर क्या सकते हैं, आप मुझे बताएं. हमने हर किस्म की कोशिश नहीं की. हमने हर किस्म की कोशिश नहीं की. This is what my point is. हमने क्या नहीं किया? हमने इंटरनेशनली उसको देखे ना, 5 अगस्त के बाद हमने क्या किया.
आप मुझे बताइए तो सही कि मेरी आप हॉस्टिलिटी आई नो आपने लिखा है कि तो आप तो कह रहे हैं जी हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट कर देना चाहिए था. नहीं, मैंने ये We should have been ready for war. मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन ओपनली से कहने की जरूरत नहीं थी. ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आपने ये लिखा है कि ये कहने की जरूरत नहीं थी, मगर आप लिखते हैं कि वॉर इज एन ऑप्शन. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने कभी नहीं कहा कि वॉर इज एन ऑप्शन. मैंने ये कहा कि कहने की जरूरत नहीं होती बाज़ औक़ात कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन. आपने कहा कि एलओसी को हीट अप करते कुछ तो आप खामोश रहिए. कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अच्छा चलिए लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर. ये तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट नॉट टू अनटाई. बट आप बड़े मायूस हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ. आपने लिखा है आई एम वेरी पेसिमिस्टिक कि पाकिस्तान इज सराउंडेड by all sorts of challenges. Our foreign policy is weak, dithering, lacks focus. Foreign office फारग हो चुका है बिल्कुल. और अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स हैं, सऊदी अरेबिया के साथ प्रॉब्लम्स हैं. ये हम क्या कर रहे हैं? You are very critical of what where we stand today, and you are very pessimistic, not just vis-a-vis India, but generally speaking, Pakistan's whole relationship with the rest of the world, including in the neighborhood. मैं तो हूँ, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग पेसिमिस्टिक ही हैं इस वक्त. आप भी मेरे ख्याल में बहुत से लोग शेयर करते हैं इस व्यू पॉइंट को कि हमने करना चाहिए था हम वो नहीं कर रहे. हमारी डिप्लोमेसी में विगर नहीं रहा, बदकिस्मती के साथ वो फोकस नहीं रहा कि हम चीज़ों को एक डायरेक्शन, एक कोहेरेंस के तहत आगे लेकर चलें. हमारी देखिए सऊदी अरब और यूएई के साथ कोई वजह नहीं थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर टीवी पे आके ये बयान देते कि ओआईसी ने हमें अगर सपोर्ट नहीं किया तो हम एक और फोरम बना लेंगे, हम एक ब्लॉग बना लेंगे मलेशिया और तुर्की का. ये कहने की क्या जरूरत? सही कह रहे हैं, मैंने भी यही कहा. सही कह रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं, इंसान मतलब एज ए पाकिस्तानी आई डू फील सैड अबाउट इट कि हम वी आर वेरी गुड इन मेकिंग स्टेटमेंट्स विदाउट थिंकिंग थ्रू. हम स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं, उनकी रिपरकशंस हमें अंदाजा नहीं होता कि क्या हो सकती हैं. हमारे सऊदी अरब के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ इतने इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं. हमारा वहां पे 4 मिलियन लोग वहां काम करते हैं, हमारी तिजारत है. तो ये किस तरह आप मुमकिन है कि आप इस किस्म के बयानात दें? तो मेरा यही कंसर्न है कि फॉरेन ऑफिस को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. मैं आपको सेठी साहब यही बता दूं कि फॉरेन ऑफिस का कभी भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे एम्फेसिस नहीं रहा. जब तक आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ अलाइन नहीं करेंगे, उस वक्त आजकल के जमाने में ये हो ही नहीं सकता. ये जियो इकोनॉमिक्स की बात तो भी आई है. मैंने हॉस्टिलिटी में लिखा है कि आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है. तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे अफसरदा करती हैं. लेकिन मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा पोटेंशियल अल्लाह ताला ने हमें दिया है. थोड़ा सा हमें रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अपने आप को, अपने फॉरेन ऑफिस को. और मेरा सिर्फ एक और भी कहना है कि 16 स्टेशन हैं सेठी साहब, 16 एक कैपिटल्स हैं जहां पे आप सही बंदे लगा दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत सी चीजें तब्दील हो जाएंगी. बासित साहब, ये सही बंदे, फरिश्ते, वही सही बंदे कहां से आएंगे? फॉरेन ऑफिस के अंदर ही से लोग आपको मिलेंगे, कहीं और से नहीं मिलेंगे. लेकिन अच्छे सही मेरिट पे आप लगाइए. My last question, because we've gone a little bit over time. My last question is कि I must confess to you कि आपने जो पहली इंटरव्यू दी, you gave it to Karan Thapar, and हमने तो उस वक्त तक किताब नहीं पढ़ी थी, हमें मिली भी नहीं थी, और आपने करण को दी. करण is a friend of mine, but I will say this, उसने बिल्कुल चुन के ऐसे सवाल आपसे पूछे which actually embarrassed Pakistan and our foreign office and our foreign policies and so on and so forth. और उसने आपके, from your lips he got a critique of Pakistan. I felt a little कि यार किसी बाद में अगर आप करते तो शायद, but I did feel कि शायद पहले you might not have considered doing it to an Indian journalist. Meanwhile, I've also given interview to Pakistani media. सबसे पहला मेरा इंटरव्यू तो वो जो है यहाँ पे बहुत से और लोगों ने किया. सलीम साफी साहब ने किया, उसके बाद जो है नजमा साहिबा ने किया, एक जो ऑनलाइन उनका डॉक्टर मोहित पीरजादा का जो है. तो मैंने यहाँ भी इंटरव्यूज दिए हैं. मसला ये है कि वहां पे लोग देख लेते हैं, उन्होंने अपने स्टाइल से किया उसको डेफिनेटली. लेकिन क्वेश्चन ये कि मैंने यहाँ भी इंटरव्यू किया. आजकल तो जमाना देख ग्लोबलाइजेशन का है. नहीं सही कह रहे हैं. आजकल तो चीजें बॉर्डर तक तो नहीं रहती, पहुंच जाती हैं. तो डजंट रियली मैटर. वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने क्या करना है. लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक. हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं,
ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. This is what my message was. I read the fact that آپ نے 4 مہینے میں یہ کتاب لکھی. You must have been thinking about it for a long time, from April to August. I'm amazed کہ آپ نے یہ کتاب 4 مہینے میں لکھ دی ہے. It is coherent. Your knowledge of the whole process is bang on target. I mean, there is not a false representation of anything. I'm very impressed. 4 مہینے میں میں سمجھتا ہوں 1-2 چیپٹر لکھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. So you must have a phenomenal memory because of all this. And I'm also saddened a little bit that a competent professional like you ended up in this situation where there were misunderstandings, lack of trust, began on the wrong foot and ended on the wrong foot. It's sad. I have enormous respect for you, sir. And we met in Delhi also, if you remember. And when you were in London also, we had meetings there. And I've always held your intellect especially in high regard. And I hope this relationship will continue. And good luck to you, sir. Thank you very much, Sethi sir, for your very kind words, which I do not deserve, but I am obliged. Thank you very much. And let's stay in touch, as you very rightly said. Very kind. Thank you. Very kind.